क्या WHO और उसके चीफ पर भरोसा करें? उन्होंने कहा कि कोविड महामारी खत्म होते हुए है। The end of COVID pandemic is in sight. ये दुनिया के लिए राहत की बात तो है। दुनिया के लोगों के कान ये खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए थे। बावजूद इसके WHO और उसके डायरेक्टर जनरल से हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। चाइना में जब वायरस पैदा होने के वक्त WHO से दुनिया को कैसा धोखा हुआ था, याद करिए। जब वह वायरस और महामारी का सत्य समय पर नहीं बता पाया तो महामारी जाने की उसकी घोषणा पर कैसे विश्वास हो? यह घोषणा उसकी रिसर्च का सत्य है या आधा अधूरा आशावाद? नमस्ते। 2 साल पहले दुनिया WHO और उसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का एक एक वाक्य सुनते हुए थी। आखिर पृथ्वी की पॉपुलेशन की हेल्थ की वही तो रियल वर्ल्ड एजेंसी है। लेकिन चाइना में वायरस पैदा होने और उस पर उसकी लापरवाही ने इस वर्ल्ड एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एजेंसी की फंडिंग भी बंद करवा दी थी। डायरेक्टर जनरल ने तब देरी से ऐलान किया था कि कोविड इज द न्यू रियलिटी। अब उन्होंने कहा है कि कोविड खत्म होता दिखता है। We are not there yet, but the end is in sight. Once again, all does this sound unreal. Though it is bundled with twine of optimism and triumph, but it does sound unreal. क्या महामारी को इंसान ने हरा दिया? वह जीत गया? या ऐसा ऐलान जल्दबाजी है? घटनाओं और वक्त के अनुभव से तो कहीं ऐसी खामोखयाली नहीं बनी है। For the recent events of world order, particularly the war in Ukraine and the climate catastrophe, the casualness, the yeah whatever attitude towards COVID and mask wearing, choosing not to stay fearful anymore, has indeed gone for a toss. Having had enough of isolation, death, anxiety, paranoia, we ourselves have decided to break free from the shackles that the word pandemic posed. And we all, in our own way, started creating our own new world order. लगता है जैसे कि ह्यूमैनिटी ने महामारी के साथ जीने की आदत बना ली है। We started living with it, we made peace with it and accepted that this was the inevitable fate. Yes, pre-COVID times and the post-COVID times have started to merge. We have started to step out, travel has become freer, the interaction has become unrestrained, the fist bump once again got replaced to hugging, and the aimless gallivanting has started to feel good again. भारत का जहां सवाल है, कई और देशी कारणों से भी कोविड रियलिटी होते हुए भी दिमाग में खत्म है। The paraphernalia of elections, winning, PRing, taking political potshots, breaking governments, keeping the prices high, सब कुछ पहले जैसा लगने लग गया है। जाहिर है इंसानों की छोटी मेमोरी सब कुछ भुला देती है। याद करें और सोचें कि 2 साल में भारत में हम लोगों ने कितना कुछ भुला दिया है। We have forgotten the death, grief and despair the pandemic had brought. We have forgotten the mismanaged empathy and callousness of our Sarkar. We forgot the plight and the helplessness of the migrant workers, their babies and kids who walked and walked beneath the heated sky on the burning road. We have forgotten that ruthless second wave that had engulfed India in a black shroud of death and damage. We have forgotten how ignorantly we followed certain dictums of the Sarkar in pure Andhavishwas at the onset of the pandemic. The Andhavishwas that still rages on. बहरहाल अब WHO फाइनली अनाउंस कर रहा है कि महामारी खत्म होने वाली है। So how truly different will our post-pandemic time look from the pre-pandemic time? Or will it look any different? Besides the small changes of personal choice of wearing masks, not wearing masks, getting boosters or not, the idea of work from home exists. It is the larger picture, however, that is altered, as there is an emergence of a new world order. In the aftermath of world wars, countries had planned, drafted and established a new order.
In the recent memory, the post-Cold War era was marked with growth underpinned by free trade. लेकिन महामारी ने तो बहुत कुछ बदला है। दुनिया आज वैसी नहीं है जैसे कोविड से पहले थी। The world faces a fractured economic system where the post-pandemic supply shock and mistrust bred by the virus pushed countries towards an autarkist impulse for self-sufficiency. हाँ, अपने आप में ये आश्चर्य की बात है कि महामारी के वक्त देशों को आपसी सहयोग की जरूरत लगी। In the aftermath of world wars, countries had planned, drafted and established a new order. In the recent memories, the post-Cold War era was marked with growth underpinned by free trade. लेकिन महामारी ने बहुत कुछ बदला है। दुनिया आज वैसी नहीं है जैसे कोविड से पहले थी। The world faces a fractured economic system where the post-pandemic supply was shaken by the mistrust that came with the virus, thus pushing countries towards an autarkist impulse for self-sufficiency. हाँ, अपने आप में यह आश्चर्य की बात है कि महामारी के वक्त देशों को आपसी सहयोग की जरूरत लगी, पर उसके साथ अलग अलग देशों में सेल्फ रिलायंस, नेशनलिज्म को भी जोर बना। So what is autarky? Autarky is a Greek word meaning self-reliance and was popularized as shorthand for economic nationalism in the 19th century. It had gained some credence as an economic model when the young Soviet Union in effect shut itself off from the world trade, and the nationalist impulse towards self-sufficiency appealed to Hitler. It also flourished in the post-war world, especially in Africa. ऐसे में कोविड के बाद दुनिया आज वाकई बिखरी हुई है। Nationalist impulse हावी है। In the post-pandemic world, the term is coming back into fashion. Before COVID had hit the world, signs and fractures had already started to emerge. Populist leaders urged for nationalism, looking inwards, adapting Trump's model of isolationism in the aftermath of trade wars with China and the Brexit of United Kingdom. Even during pandemic, there was the initial scramble to protect production of face masks in France and Germany. Individualism paid importance even in a time of global crisis, and then same thing happened with the COVID vaccines. Countries turned inward, being boorishly adamant to not share its knowledge and trademarks, raw materials for developing vaccines in smaller countries. As such, the poorer countries continued to suffer. इसलिए महामारी के दुनिया पर साइड इफेक्ट कई तरीके के हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया की पॉलिटिक्स पर। In the post-Cold War time, trade and security was shared and was not treated as politics. But today, politics is centered around them. China's Made in China, India's Atmanirbhar Bharat, UK's Brexit, then the Ukraine-Russia war has drastically hit trade and supplies, which has in turn hit the global economy and the social structure. कुल मिलाकर WHO का ऐलान और असेसमेंट अच्छा है। उम्मीद करनी चाहिए कि महामारी से बाहर निकलने के बाद WHO और दुनिया 2 साल के अनुभवों पर भविष्य के खतरों पर अधिक समझदारी से रोड मैप बनाएगी। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर इंसान में मौत का डर और चिंता का साझा तो बनवाया ही है। In coronavirus, we, the world, also found itself united by a shared fear, shared limitations, and a new shared vocabulary. But as the pandemic is coming to an end, is an ending sight, and thank God for that. But the world does not find itself united by the new vocabulary besieged with uncertainty and self-reliance. दुनिया का सबक सीख अपने आप को बदलना होगा। इसका अर्थ पूरी दुनिया और उसके सभी देश यूनाइटेड कंसर्न में अपने को बदले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।